Hello everyone, welcome to Siddhi Academics. I'm Amrita. I firmly believe that you should keep trying until you get it right. Let's start our trial for today. Let's do Olympiad questions for simple interest. I have done introduction to simple interest in 2 of the previous videos. If you haven't watched them yet, please go to the description of this particular video. You can find the links for those 2 videos about introduction to simple interest. And then we will learn how to solve Olympiad questions for class 7 on simple interest. So this first question is from Olympiads for grade 7 for simple interest. The question says, if the simple interest on a sum is equal to the principal and number of years is equal to the rate % per annum, then rate of interest is 10% per annum. You have to find out if it is true or false. We have to identify. So अगर simple interest और principal दोनों same है, so that means simple interest is equal to प्रिंसिपल, मैं P लिख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एंड नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टाइम इज इक्वल टू रेट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डेफिनेटली 10% पर एनम. लेट्स चेक. तो फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बाई 100. तो यहाँ पर SI की जगह पर मैं प्रिंसिपल डाल सकती हूँ, बिकॉज इन द क्वेश्चन इटसेल्फ इट इज टोल्ड दैट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल. सो यहाँ पर तो P है ही, and then instead of time period T, I can write the same as rate R into R, क्योंकि time period is equal to rate of interest divided by 100, right? So ये simple interest principal और principal दोनों साइड में same है, so I can cancel them out. So what remains is 1 is equal to R square by 100. Okay, I can cross multiply now. इस साइड में नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, so I'll multiply this 1 into R square and this 100 into 1, so it will become R square equal to 100. Therefore rate is equal to 10% per annum. It's simple. Because if R square is 100, then definitely 10 into 10 is 100, so rate of interest is 10% per annum. So this is true. Okay, this statement given here is true. So ये तो हो गया true or false questions. कुछ और questions होंगे जहां पर हमें solve करने होंगे. Let's solve also. Now the question here says that rupees 800 becomes rupees 956 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 4%, then what amount will rupees 800 become in 3 years? So rupees 800 जो है, that is the principal amount, right? तो ये क्या होता है, जब हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर 3 years, टाइम पीरियड भी दे दिया गया है 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, लेट दैट बी R, और अमाउंट क्या बन जाता है, अमाउंट आफ्टर 3 years दैट वी गेट इज रुपीज 956. तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं. सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 956 माइनस 100, सो इट इज रुपीज 156, राइट? अब I can easily find out rate of interest because बाकी सब चीज तो given है. तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. C is equal to PRT by 100. So interest के जगह पर मैं लिख दूंगी, sorry not C but I, simple interest is equal to PRT by 100. Now I can write 156 here equal to 800 into T into R. अच्छा T क्यों, 3 ही डाल देती हूँ यहाँ पर, 3 by 100. So ये 100 and 100 कैंसिल हो जाएगा. Now we can cross multiply. यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब by 1 है, so if I cross multiply, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, so 156 into 1 is 156, और यहाँ भी 1 multiply होगा 8 into 3 24 के साथ, so it will be 24 R. So therefore R will be equal to 156 divided by 24. अच्छा, let's do this. What will the division give us? 24 156 अगर मैं डिवाइड करूं, so I have to do with 6, so it will be 144, right? 144 होगा, so 6 minus 4 is 2 and this is 1. so यहाँ पर कुछ और नहीं है, so let's bring this 0, decimal point देके ये 0 नीचे ले आते हैं, so 120 हो गया, so ये 6.5 120 हो जाता है, राइट?
So rate of interest with 6.5% per annum. ऑलराइट, तो ये हमें रेट परसेंट मिल गया. नाउ इफ इट दैट रेट परसेंट इज इंक्रीज बाय 4% एंड देन व्हाट अमाउंट विल रुपीज 800 बिकम इन 3 years. अगेन बहुत क्वेश्चन इजी है. हमारा जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज R+4, so it will become 6.5 plus 4 which is 10.5% per annum. So इस बेसिस पे हमें निकालना है क्या बनेगा अमाउंट. पहले सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल ले, उसके बाद अमाउंट तो इजीली मिल जाएगा. सो मुझे यहाँ पर डालना है प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है 800. नया रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन आई एडेड 4 टू इट इज 10.5. टाइम पीरियड 3 years दिया गया है डिवाइडेड बाय 100. सो ये कैंसिल कर देते हैं. व्हाट रिमेन्स इज 24 into 10.5 है ना. सो लेट्स मल्टीप्लाई 24 with 10.5. सो इफ यू सी 10.5 जो है मैं इसको इससे भी लिख सकती हूँ 10 1/2. यहाँ लिख देती हूँ 10.5 इज नथिंग बट 10 1/2. सो विच इज नथिंग बट 21/2. तो ऐसे भी लिख सकती हूँ 21/2. आई एम जस्ट मेकिंग द कैलकुलेशन पार्ट इजियर. सो इट विल बिकम 12 into 21. 12 into 21 अगर हम करेंगे so it will become 21 into 12. It will become 42 plus 21. So it is 252. ये है सिंपल इंटरेस्ट. ओके, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया है हमें फाइंड करना है अल्टीमेट हमारा एम है अमाउंट कैलकुलेट करना. सो लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. तो सिंपल इंटरेस्ट है 252 और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा यहाँ पर 800. सो वी हैव टू ऐड दिस टू अप. सो अमाउंट फाइनली वो कम्स अप टू बी y2 वैसे ही आगे 8 plus 2 is 10. So amount is rupees 1052 which we will get if we invest rupees 800 for 3 years at 10.5% per annum. All right. तो एक एक करके हम स्टेप में कैलकुलेट करेंगे, आंसर से ही जरूर निकल आएगा. Let's solve this question. The question says rupees 8,000 has been divided in two parts such that if one part is lent at 7.5% per annum for 2 years and the other at 8% per annum for 3 years, then the total interest received is rupees 1,416. Find the two parts into which rupees 8,000 gets divided. So first let's find the write down the given statements. Total amount which has been divided into two parts is rupees 8,000. So let the first part be P1 and the rate of interest given is 7.5% per annum and time period for this is 2 years. Now we can express P2 which is the second, the sum of P1 plus P2 is 8,000. That means P2 is how much? The second principal amount. That is definitely 8,000 minus P1. There is no doubt about it. And let this be first rate of interest R1 and first time period be T1. So we can write for principal P2 the rate of interest is R2 which is 8% and the T2 time period is 3 years. Now easily I'm writing everything, but you did not. You have to solve it as fast as possible. I'm just showing you so that you understand the question well. Total interest from both the principal amount is 1,416. Okay, so now let's find the first simple interest SI1 which by 100. So here P1 we know that will be as it is, and 7.5% is 7.5 actually into 2 divided by 100. So 7.5 into 2 is nothing but 15 by 15 P1 by 100. So I can write 15 by 100 as 0.15 P1, right, decimal. Now SI2 is P2 into R2 into T2 by 100. So P2 instead of P2 because I want to solve everything and find out the first principal amount. So let that be 8,000 minus P1 into 8 into 3 by 100. So this is 24. 24 by 100 is 0.24 into 8,000 minus P1.
So I is equal to SI1 plus SI2. So what is the SI value? We are already given with it 1416 और SI1 we have already found it. ये क्या है 0.15 P1 है और SI2 क्या है 0.24 into 8000 minus P1. तो अब क्या करेंगे इकट्ठे कर मतलब पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 0.15 P1 प्लस 0.24 इंटू 8000 अगर करेंगे तो क्या होगा 24 इंटू it's actually this right 0.24 into I'm just showing every step so that you do not if I calculate mentally it does not make you I mean doesn't cause any doubt in your mind. So it is actually what 24 into 80 right. ये मैं डेसिमल पॉइंट हटा के ये जीरो भी हटा दूंगी इसलिए. So I have to in this thing multiply 24 into 8 so that is 192 and एक zero है end में. So this is rupees 1 not rupees 1920. So I'll write here 1920. Then this plus 0.2.4 minus P1 plus minus minus आएगा यहाँ पर minus 0.24 P1 right. अब हम क्या करते हैं we will take the constant terms to one side so it will be 1416 minus 1920 और इस साइड पे P1 का वैल्यू वैसे निकल जाएगा. So let us keep P1 together. So now if you subtract these two what it will be 1920 minus 1 in हमें तो करना है ना 1920 minus 1416 और नेगेटिव इंटीजर आएगा बिकॉज ये जो है बड़ा वैल्यू है. So definitely negative integer आएगा. So 10 minus 6 is 4 और यहाँ पर जो borrow हुआ है इसलिए 1 बचा है 1 minus 1 0 हो जाएगा. 9 minus 4 अगर हम करेंगे so 5 so it is 504 equal to यहाँ पर again negative आएगा because 0.24 is the bigger value and minus n is assigned here. So it is 0.09 P1 right. Therefore P1 will be equal to ये नेगेटिव इंटीजर यहीं पर एक कॉमन है so cancelling it out. So what remains is 504 divided by 0.009. So I can multiply 100 and remove this decimal point from the denominator. So if I do this what will be the answer I'll write here. Therefore P1 will be equal to 9 5s are 45. So 45 means 50 minus 45 करेंगे so 5 आ जाएगा 5 और 4 आ जाएगा so 54 that is 9 6 are 54. So it is actually nothing but rupees 5600. P1 का वैल्यू आ गया. So let me write down here P1's value. P1 is equal to rupees 5600 right. अब P2 का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं. P2 will be how much 8000 minus P1. P1 है 5600. So if you subtract what you get is 0 आराम से आ जाते हैं ये 0 and 10 minus 6 4 and यहाँ पर हो जाता है 7 minus 5 which is 2. So P2 का वैल्यू बन जाता है this implies P2 is equal to rupees 2400. तो ये दो वैल्यूज निकल गए P2 और ये हमारा आ गया P1 का वैल्यू और यहाँ पर मैं ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ P2 का वैल्यू. ओके इरेज नहीं हो रहा फॉर सम रीजन. सो लेट्स रिमेंबर P1 value is 5600, P2 value is 2400. If you add them up you get 8000 which means answer is correct. This question number 4 says Soumya borrowed rupees 15,000 at the rate of 12% per annum for 2 years and another amount at the rate of 15% per annum for 2 years. The total interest paid by her was rupees 9,000. Find the amount she borrowed at 15% per annum. Okay. So Soumya ने borrow किया है. So first principal amount that she has borrowed is rupees 15,000 at the rate of 12% per annum for the time period 2 years. And we don't know the second principal amount. तो वो P2 करके मैं छोड़ देती हूँ. R2 is equal to 15% per annum and the time period here also is the same 2 years and total interest that she gave
फॉर बोरोइंग, अगर कोई बोरो करेगा तो डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो उसने दिया है on principal 1 and principal 2 together is rupees 9,000. So 9,000 here is the total simple interest. So that constitutes simple interest 1 plus simple interest 2. और हमें वैल्यू निकालना है P2 का, तो SI1 जो है वो हमारा कितना होगा 15,000 इंटू 12 इंटू 2, मतलब मैं ये सब कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट रो में जितना कुछ भी है, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट की जगह पर ये वैल्यू 9,000 लिख दूंगी. सो इट विल बी 9,000 हियर प्लस I don't know what's the value of P2, so we'll keep it P2 like that. 15 into 2 by 100, right? So ये 0 0 cancel हो गया. What remains is 15 into 12 into 2. So अगर मैं actually 12 into 2 is nothing but 8 into 3. See, I always use this kind of methods. So I'll do 15 into 8 first. 15 into 8 is actually how much? 120. 120 into 3 is 360. So this is 360. And 9,000 वैसे ही I'm writing as it is. Plus ये क्या हो जाएगा? 15 into 2 is 30. 30 by 100, which means 0.3 P2. Now I have to do is find the value of P2. P2 is how much? 9,000 minus 360 divided by 0.3, right? So ये 0 minus 0 cancel हो गया, 0 हो गया, 10 minus 6 हो गया 4, यहाँ बचा है 6, 6 minus 3 is 9, and यहाँ पर 8 बचा है, 8 940 divided by 0.3, तो into 10 कर लेते हैं. So यहाँ पर हो जाएगा 89400 divided by 3. So 3 ones are 3, 3 twos are 6, and ये 2 चला गया यहाँ पर, right? 8 minus 6 is 2, 2 चला गया है, 29 हो गया है. So 3 9s are 27, 29 minus 27 again 2 यहाँ चला आया, 3 8s are 24 हो गया. Every number has been thoroughly subtract करके 0 हो गया, fully divided. 0 0 वैसे ही आ जाएंगे. So the second principal amount which she borrowed, Soumya borrowed, was rupees 29,800. This is what she borrowed at 15% per annum. So I'll write the amount here, rupees 29,800. Okay. ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, बस कैलकुलेशन करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, so that we solve all the 15 questions within the given hour. Let's find the value of m by n here. यहाँ पर m निकाला है which is simple interest फर्स्ट रो में, बाकी वैल्यूज गिवन है, और सेकेंड रो में n निकाला है जो है प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी सारे वैल्यूज गिवन है. सो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला में डाल देते हैं प्रिंसिपल 2500 इंटू 12 विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3 विच इज टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100. ये 0 0 कैंसिल हो गए. सो व्हाट रिमेन्स इज 25. 12 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 इंटू 3. So this becomes 25 into 4 is 100. 100 into this 3 into 3 is 9. So it becomes 900, right? Rupees 900. N का वैल्यू निकाल देते हैं. N is what? N is actually principal. तो principal निकालने के लिए जो फॉर्मूला है that is 100 into simple interest by R into T. So 100 into 1255 divided by 8 into 5. So this is 40 here. So 100 into 1255 by 40. So ये 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 4 ones are 4 and 4 into 2.5 is 10. So 2.5 कर देती हूँ मैं इसे. So how much I have to multiply? I have to multiply 1255 with 25. So 5 5s are 25, 2 gets carried over, 5 5s are 25, again it becomes 27, 5 2s are 10, 2 has been carried over, if we add that it becomes 12, so 1 रहता है, 1 से 5, so ये हो जाता है 6275. So now 2 5s are 10, 2 5s are 10 and that carried over 1 is 11, 2 2s are 4, again carried over 1 5, and here it is 2. So we have to add all this up, 5 7 3 11 3. So answer here is 3137. मैं डेसिमल पॉइंट मिस नहीं कर सकती क्योंकि मेरा यहाँ पर 2.5 है.
सो आई हैव टू डू m बाई n, राइट। अच्छा, ये तो रुपीज में भी है, ये भी रुपीज में है, दिस प्रिंसिपल अमाउंट n। सो m बाई n अगर मुझे निकालना होगा, सो आई हैव टू डिवाइड 900 बाय 3137.5,